हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लाइव दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था थोड़ा सा सॉकेट्स और इन सब के बारे में सीखने की कि कैसे एक्चुअल लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग एक एचटीटीपी सर्वर को, और क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं ये वगैरह। ठीक है, मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ ये सीखने की, और मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको लाइव ऐसे बैठ के सीखा जाए और ट्राई किया जाए। तो आई फाउंड रियली there are two videos I found it on the YouTube channel. One of the YouTube channel, I don't remember the name, so I uh, and फिर से स्टार्ट हो गया होगा नेट। लेट मी ट्राई, लेट मी चेक द YouTube channel, I don't remember. यस, तो नेट फिर से नेट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। ठीक है, तो मैं फिर से क्या बोल रहा था, हाँ कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एच टी टी पी सर्वर अगर मैं सी प्लस प्लस जैसी किसी लो लेवल लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करूँ तो कैसे करूँगा, ये सब सीखने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे यूट्यूब पे दो बहुत ही अच्छी वीडियोस मिली, और मैं उन वीडियोस का यूज़ करके ट्राई करूँगा इम्प्लीमेंट करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और ये मैं अभी ही जस्ट मैंने बनाया है, क्या बोलते हैं, जो थंबनेल वगैरह है अभी जस्ट बना के रखा हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैंने इसको एच टी टी पी सर्वर एच टी टी पी सर्वर इन सी प्लस प्लस। नहीं, ये नहीं था, ये भी नहीं था, दो थे। ठीक है, 99। कहाँ गया वो वीडियो यार, मैं अपना हिस्ट्री नहीं दिखाना चाहता तुमको। चलो एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। हम्म, मैंने रखा तो था यार वीडियो, कहाँ, वॉच लेटर में डाल रखा था शायद। एच टी टी पी सर्वर इन सी, नो, इसमें भी नहीं है। प्लेलिस्ट में डाल रखा है, प्लेलिस्ट में भी नहीं है आई थिंक। नहीं, इसमें भी नहीं है। हाँ चल, मिल गया। ठीक है, ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी थी, structure. इसमें And इसमें डाल what is रखा था। there that चलो भाई स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्ट से चालू करते हैं। चलो, Hi ये पहला everyone. वीडियो है, तो दो दो वीडियोज़ हैं इसमें। ठीक है, तो ये मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। निकोलस डे नाम से ये चैनल है, और 4 साल पहले का वीडियो है, 170,000 व्यूज़ हैं इस पर। लेकिन दिस वीडियो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और मैंने लगभग 30-35 मिनट्स का वीडियो देख भी रखा था। बट फिर से हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ताकि फिर से समझ में आए। In this कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया lecture, था। we're going to take a look at network programming. And we're actually going to divide this subject into two lectures. This is going to be part one of two. So Yep. in this lecture, this week, we're going to take a look at how we can create a server application that listens out for client applications attempting to connect to it. And then in the next lecture, in part two, we'll take a look at how the server and client applications can send data back and forth from each other using UDP and TCP connections. Okay, so Okay. here in part one, in this lecture, we'll take a look at the code that we need to use to set up a socket so that the server can listen out for a client attempting to connect to it. So let's start by having a look at the socket. And sockets were initially developed for Unix systems. It was only later that Windows developed their own version of the socket called WinSock, which is short for Windows Socket. And WinSock is another example of an API that works with low-level Windows types, a bit like our threading examples from a previous lecture, to be able to make use and interact with the resources. इनका प्रीवियस लेक्चर मैंने देखा नहीं है, बट जहाँ तक मुझको पता है डब्ल्यूएस जो सॉकेट्स हैं वो इस वाली फाइल में है। तो ये फाइल अगर मैं चेक करूँ अपना विंडोज सी में जाके, विंडोज़ में जाओ, सिस्टम 32 में कहाँ गया, ये है सिस्टम 32 में, और यहाँ पे होगा डब्लू नाम से। तो अगर मैं डब्लू 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 यस, ये W32 और WS2 ना, WS2 WS2 यस, विंडोज WS यस, WS2 कहाँ है, WS2 कहाँ है, यस ये है WS2 32 DLL। तो यही फाइल है, वो DLL फाइल है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको विंडोज़ यूज़ करता है टू इम्प्लीमेंट सॉकेट्स। ठीक है,
Okay. of the operating system. By the way, WSA is short for Windows Sockets API. So whenever you see WSA in the code, that's what it's referring to. On Windows Windows Sockets systems, API. the core components of the socket come in the form of a DLL file, which specifically is the ws2_32 file, which is located in the system32 folder of the DLL का core फुल फॉर्म क्या installation होता है? Windows. डेटा लाइक क्या होता था? DLL फाइल्स क्या होता था? DLL फाइल्स डायनेमिक, अच्छा डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. ओके. And if you're unfamiliar, the DLL files are specific to Windows, stands for Dynamic Link Library, and these are files that contain compiled code that can be reused by multiple applications. So rather than having to duplicate this code, which of course the socket will handle the connection between the hardware and the software. So it'll take care of all the low-level ports and IP addresses and the connections between the two layers, rather than having to repeat that and duplicate that in every application that wants to make use of the socket functionality, it's written once and placed within a DLL file so that all the applications that want to make use of that functionality just have to incorporate that DLL file. So that process. Taken a networking module before, I'm sure this will be familiar to you. Yes, OSI मॉडल, OSI एंड TCP ये सब मॉडल्स पढ़ा था मैंने, OSI IP. और लेकिन बहुत काफ़ी दिन हो गए, तो इसमें क्या होता था, 7 लेयर होती थी, ये तो याद है मुझे. अच्छा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर. ओके. एप्लीकेशन में इनपुट अपडेट्स, स्टेट अपडेट्स आता है. प्रेजेंटेशन में सीरियलाइजेशन करते हैं. सेशन में सॉकेट्स आ जाता है. तो सेशन वाली जो तुम्हारी लेयर होती है उसमें सॉकेट्स आते हैं. ट्रांसपोर्ट में TCP, UDP ये प्रोटोकॉल्स आ जाएंगे. नेटवर्क में IP आ जाएगा. डेटा लिंक में ईथरनेट आ जाएगा. और फिजिकल में तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक्स, बस और cables वगैरह आ जाएगा. For those who haven't, or even those that have and haven't seen it for some time, I thought it'd be useful to visualize how we send data from one application to another application across a network. So really, up until now, we've only been concerned with one system resource, the operating system, down to the physical layer, the hardware, essentially. Okay. So this like transport. ये तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, तो इसको मैं So that skip just कर रहा हूँ इस part को. to another over a network. So now that we've seen the OSI model, we now know that in order for a connection to take place between two devices, or more specifically, for one device to send data to another device via a network, we now know that the data आर्किटेक्चर की बात करें अगर हम, तो अगर मैं एक्सेलीड्रो में जाकर लाइक बनाऊं, ठीक है, तो हम लोग अगर बनाए तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होगा एक सर्वर, ठीक है, और ये तुम्हारा होगा एक क्लाइंट. ये दो एप्लीकेशन होंगे, ठीक है, क्लाइंट, ये दो एप्लीकेशन होंगे. इन दोनों के बीच में प्रोटोकॉल चल रहा होगा. अच्छा, कनेक्शन आर्किटेक्चर में क्या होता है, सर्वर जो कनेक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टू डिवाइसेस एंड ईच साइड यूजेज इट्स ओन IP एंड पोर्ट. तो इसका अपना एक IP होगा और अपना एक पोर्ट होगा. तो ये पोर्ट मान लो यहाँ पे इनका अपना एक पोर्ट है, ठीक है, और इनकी अपनी एक IP है. और सेम केस होगा तुम्हारे क्लाइंट के साथ में भी. तो सेम केस होगा तुम्हारे क्लाइंट के साथ में भी, ठीक है. द अदर साइड, usually one side is called client, the other side is called server. The server is continually waiting for incoming connections. This is called listening, which is always done on a certain IP and port number. ओके, तो ये अपना एक पोर्ट को यूज़ कर रहा होगा किस काम के लिए, टू लिसनिंग, ठीक है. ये कॉन्स्टेंटली लिसनिंग का काम करेगा, ठीक है. यही होता है. हम लोग जब एक्सप्रेस में भी अगर Node.js का यूज़ करके तुम सर्वर बनाते हो तो तुम एक पोर्ट डिफाइन करते हो, और तुम्हारा जो IP होता है वो तुम्हारे सर्वर का लोकल IP होता है, लाइक तुम्हारे कंप्यूटर का लोकल IP होता है, उसका यूज़ कर रहे has होते to be हैं हम sent लोग. from the application layer and then descend down to the physical layer of the sending device, and then to ascend from the physical layer to the application layer in order for it to be received at the other device. So whilst the OSI layers will be the same for the two devices connected via the network, the roles and the tasks that these two devices perform will differ in a client-server architecture. Now, that's where we will label one of the devices to be a client and the other device to be a server. And they each perform different roles and tasks. Now, it's true that a server can have connections with more than one client, and also a client can have connections with more than one server. But the roles of the server are to listen out on a port number and a certain IP address for clients, which could be more than one client, attempting to send a request to connect to the server via that port number.
Okay, so whilst the client and the server will share similar networking code in order to facilitate a connection between each other, the server has the responsibilities of listening out for connections for clients, and the client can send requests to connect to a certain IP and port number. Okay. And devices on the network are given their own unique IP address. So both server and client use an IP and port number. हाँ ठीक है. The IP address of both server and client is configured during network setup unless it is allocated dynamically. हाँ, तो हम लोग जब भी कोई एक नया क्या बोलते हैं, नया एक सर्वर बनाते हैं किसी भी क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड का यूज़ करके, लाइक क्लाउड प्रोवाइडर्स का यूज़ करके, तो हम लोग उसमें नेटवर्क सेटिंग्स करते हैं ताकि हम लोग उसको एक IP एड्रेस अलोकेट कर पाएँ, या फिर तो वो डायनेमिकली भी अलोकेटेड होता है, तो आपको नहीं सेट करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है. ठीक So है. therefore, if the server and client are connected on the same local network, then the network setup will allocate them usually a static IP address, Okay. which will reflect the fact that they are in the same network, but they will also be unique as well for each machine, so that each machine can be identified by its unique IP address. And machines on a network that are intending to maintain a constant connection with the server tend to be allocated a static हाँ, तो ये लूप बैक एड्रेस होता है ना. लूप बैक एड्रेस को, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए मैं अपना उबंटू खोलता हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट पे, ये बेसिकली WSL है. स्टार्ट हो जाओ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड, आई डोंट नो व्हाई, बट इट टेक्स सम टाइम. सो अगर मैं इसमें इफ कॉन्फ़िग चलाऊँ, ठीक है, तो इसमें देखो ये जो एलो है ना, ये तुम्हारा लूप बैक एड्रेस है, ठीक है, और ये दिखा रहा है ये, और ये मेरा ईथरनेट का है, तो ये हमारा IP एड्रेस दिखा रहा है. मुझे ये दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, चलो. IP address, meaning that they won't change because there's no need for it to change if it's always going to be connected with the server. However, examples of dynamic IP allocation may be for wireless devices, for example, which may well join for a period of time and then exit the network. So that's in the case of a LAN, a local area network, where there are multiple machines connected to a router. But in our case, for the practicals, we're going to simplify things just to get started, where we are going to use the same machine and create one application for the server, and then on the same machine have another application enacting the client. So that they don't have to connect via a network, they can instead go down the layers of the OSI model on the same device, and of course back up again. So we're going to use the loopback address, which is 127.0.zip reserved for. But of course, if you want to extend the practicals for this week, this is something that you might want to try doing. So if you have access to a router at home and have different devices, you could well try and configure the network so that you could run the server application on one machine and then get it to chat to the client application on a different machine via the network. But just remember that each device on the network has its own unique IP address. So remember that you'll have to configure the applications for that. They won't be the same IP address in the practicals that we're going to do because we're working with we're about to look at ports in a little bit more detail, and there's a point here that's worth raising within the, all right, and we'll see later that the client, whilst it's allocated a port, can specify the port number that it wants to connect to. So it's going to be allocated a port for the sockets, which it can't change, but it can specify that it wants to connect to the port number of the server, which is specified in the code. All right, so let's move on and talk a little bit more about ports now. And so for every machine which has an IP address on the network, there will be even more ports available on that machine for which the machine can send and receive data. So this maps onto the real world, where each country has a number of ports upon the coastline for which cargo and goods can be delivered into the country and also sent out from the country. And so if I wanted to send... पोर्ट बेसिकली 16 बिट एड्रेस होता है, और इंटीजर हो सकता है 1 and 65,535 के बीच में. या जनरली ये पोर्ट्स होते हैं वो पहले से ही लाइक रिजर्व्ड होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेल नोन एप्लीकेशंस जो हैं बेसिकली, तो तुम्हारी लाइक जो बहुत ज़्यादा यूज्ड एप्लीकेशंस हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं या प्री इंस्टॉल्ड जो भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तुम्हारे उन लाइक 1 से 1023 पोर्ट्स पे होते हैं. तभी हम लोग जनरली कोई भी एप्लीकेशन जब डेवलप करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, Next.js जैसे पोर्ट नंबर 3000 पे चलता है, और तुम्हारा वीट से करोगे तो वो 5173 पे चलता है. ठीक है. इट इज़ रिकमेंडेड टू चूज अ नंबर ओवर 102724. Something from the let's say networking that it can get to the receiver. हाँ, तो नेटवर्क इसमें पोर्ट में क्या होता है, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ मेरे साथ, हम लोगों के साथ, कि हम लोग जैसे मैंने क्या किया बहुत पहले जब हम लोग इंटर्नशिप के टाइम पे, तो इतना पता नहीं होता, तो अपाचे सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था हमारे सर्वर पे, जो हम लोगों को कंपनी ने दिया था इंटर्नशिप सर्वर, उस पर अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, और मैंने एनजिनिक्स भी इंस्टॉल कर दिया. तो क्या हो रहा था, जैसे अपाचे पहले से ही पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 जो हम लोग HTTP और HTTPS के लिए यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी अपाचे लाइक उस पर लिसन कर रहा था. ठीक है. तो एनजिनिक्स वॉज वेटिंग फॉर इट कि कब हमको पोर्ट वो खाली मिले.
तो मैंने एनजीनिक्स इंस्टॉल किया, फिर मैंने यूज़ नहीं किया था एनजीनिक्स, लेकिन वो इंस्टॉल था और मैं भूल गया था। तो रिसेंटली क्या हुआ कि हमारा अपाचे सर्वर बाय सम रीजंस क्रैश किया, लेकिन फॉर दैट लाइक पार्टिकुलर टाइम हम लोगों का जो पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 था दैट वाज अवेलेबल। और फिर क्या हुआ, सडनली एनजीनिक्स ने वो पोर्ट्स को लाइक लिसन करने लगा उस पोर्ट पे, और अब एनजीनिक्स ने पकड़ लिया वो पोर्ट। फिर अपाचे रिस्टार्ट भी हुआ, लेकिन अपाचे वाज नॉट एबल टू रिस्टार्ट बिकॉज वो पोर्ट्स जो थे वो फ्री नहीं थे। और अब क्या हुआ, जब पोर्ट्स जो फ्री नहीं है तो अपाचे हम लोगों का क्रैश कर रहा है बार बार, और हम लोग कुछ और ही सर्व हो जा रहा है, कुछ और ही चल रहा है, ऐसा करके हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, पता किया, मतलब देखा कोशिश करके, तो बाद में देखा कि अपाचे रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। रिस्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पोर्ट इज़ ऑलवेज लाइक ऑलरेडी इज़ इन यूज़। तो फिर बाद में याद आया कि अच्छा हाँ, एनजीनिक्स का भी इंस्टॉल किया था, हो सकता है वो लिसन करने लगा हो। तो फिर हमने उसको चेंज किया, एनजीनिक्स को इंस्टॉल किया, फिर अपाचे को दोबारा रिस्टार्ट किया तो चलने लगा। तो वही बोल रहा है कि तुमको ऐसा नंबर चूज़ करना है जो 1024 से ऊपर हो, क्योंकि जनरली 1024 से नीचे वाले जो पोर्ट्स होते हैं पहले से रिजर्व्ड होते हैं और वो पहले से यूज होते हैं। ठीक है। 1,000 ports or 1,000. Choose a port number greater than 1,024. And I think in our practical, we're going to go with the port number 55,555. That tends to be a constantly available port number. It's not in demand, so that tends to work. All right, so we'll have a go at setting that up later. Great, so now that we've established that each machine on a network has its own unique IP address, and then at each IP address there will be a different number of ports in which data can be sent from and then received by. Okay, now that we've covered that information, what we can do is we can actually undergo a process of binding that IP address and port number to a dedicated socket. Now there'll be one for the server which listens out for clients attempting to connect to that socket, and then the client itself will create a socket which will specify the details of the server, the IP address and the port number that it wants to connect to. So we have this two-way reciprocal connection here. The server is in listening mode, willing to accept requests that come in, and then the client is active in sending out requests to those particular details, the IP address. तो सॉकेट्स अगर हम देखें तो सॉकेट्स बेसिकली काइंड ऑफ एक पाइपलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक पाइपलाइन बनाने की कोशिश करूँ तो मैं पाइपलाइन कैसे बना सकता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। ठीक है? ये तुम्हारा एक पाइपलाइन हो जाएगा, दो पाइप बना, दो सर्वर्स के बीच में ये तुम्हारा एक लाइक दो दो कंप्यूटर्स के बीच में तुम्हारा एक पाइपलाइन हो गया। बट ये क्या होगा, एक पार्टिकुलर पोर्ट पे लिसन कर रहा होगा। तो हमने ये कर लिया, तो ये एक पार्टिकुलर पोर्ट पे ही लिसन कर रहा होगा, ये इसका पोर्ट हो गया सर्वर का। ठीक है, और सर्वर क्या है, पाइप बिटवीन टू कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क थ्रू विच डेटा फ्लोस। तो अब यहाँ पे इसमें अंदर जो है वो डेटा फ्लो कर रहा होगा। इसको मैं कुछ और दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको दिखा, डेटा फ्लोज। ओके, यहाँ पे डेटा फ्लो कर रहा होगा, ये पाइप है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। तो तुम्हारा जितने भी तुम पैकेट्स भेज रहे हो दैट इज गोइंग थ्रू अ सॉकेट। सॉकेट इज बेसिकली अ पाइपलाइन बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू विच आवर डेटा फ्लोज। ठीक है, address and the port number. And then once this connection has been established, once the request from the client is approved by the server, the socket will then facilitate two-way connection where data can be sent and received via that socket. All right, so essentially the socket acts as the pipe between two computers on a network to enable data to be transferred between the nodes on a network. And so there are अच्छा, तो सॉकेट्स जो होते हैं वो टू वे कनेक्शन होता है, तो डेटा जो है वो दो डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लाइक इस डायरेक्शन में भी जा सकता है एंड डेटा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, सॉकेट्स, और दो टाइप के सॉकेट होते हैं, सॉकेट स्ट्रीम एंड सॉकेट डेटाग्राम। ठीक है, डेटाग्राम two different types of sockets, which we're going to explore further on in part 2 in the next lecture. But just to give you a summary, there is the streaming socket, which utilizes the TCP protocol, stands for Transmission Control Protocol, and this tends to be a more secure connection between server and client, and it's constantly checking that this connection is established to send data, and it sends it in the form of packets, as all computers do, and then reassembles it at the ओके। सो मेरा फिर से नेटवर्क का लफड़ा हुआ है, थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है। आई गेस फिर से ठीक हो गया होगा। यप, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, इज इट वर्किंग नाउ? यस, नाउ इट इज वर्किंग अगेन।
doesn't require a connection, but is faster and does have its uses. But we'll unpack this and discuss this more in the next lecture. So for now, let's transition and have a look at an illustration now that we've got together. Server depicted as a rectangle. And within the server, we're going to create a socket, which is depicted as an oval here. The server creates a new socket. When created, it is yet to be bound to an IP or port number. Hence, the status of this socket is unbound. But when we bind this socket, what we're doing is we actually bind the IP address and the port number to the socket itself. So you notice now that the status has changed from unbound to bound. And that... तो बेसिकली पहले जो सर्वर है, ठीक है, हम लोगों का जो सर्वर है वो एक सॉकेट को बनाएगा, ठीक है। सर्वर जो है उसने एक सॉकेट बनाया, ये मान लो इसका एक सॉकेट हो गया, और इस सॉकेट को इसने एक आईपी एड्रेस और उसके पोर्ट पे, तो बेसिकली ये तुम्हारा आईपी एंड पोर्ट में मान लेता हूँ, तो ये तुम्हारा आईपी और उसका पोर्ट है, उस पे इसने बाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसने इस पे बाइंड कर दिया सॉकेट को। तो इस लाइक इस स्टेट को बोलेंगे बाउंड, ठीक है। और पहले जब केवल सॉकेट बना था और अभी बाइंड नहीं किया था इसने आईपी एंड पोर्ट से, तो उसको बोल देंगे अनबाइंड। ओके, unbound. We see the appropriate details for the IP address and the port number that we are going to set up the socket to listen out on. And that's the next step. So if we go to the next slide now, you'll see that we've changed from the status of being bound to listening. So what we're doing here is, now that we've bound the socket, bound the details of the IP address and the port number as the socket, we are now in listening mode, where we are listening out for incoming requests on those details. So through that port number, we're listening out for clients to connect to the socket through that port number. And now let's say that a client comes along and it wants to connect to the server. Well, first it's going to have to create a socket of its own. So whether this is another machine on the same local network as the server, or indeed the same machine, in our case, for our practicals, we're going to keep it nice and easy, and we're going to create the server and the client on the same machine and get them to talk to each other via different Visual Studio projects and separate compiled Hi bro, applications running at the same time. But regardless of whether it's morning, the same machine morning. or two different computers Not on the morning same here. network, No, the no, client is Abhay. still going to have to create its own socket, which as the server did, it starts as unbound, and then रिक्वेस्ट कनेक्शन। ओके, सो क्लाइंट भी एक सॉकेट बनाएगा। क्लाइंट सॉकेट, जो क्लाइंट है उसने भी एक सॉकेट बनाया और उसने भी उस सॉकेट को एक पोर्ट नंबर से बाइंड किया, एंड देन द सॉकेट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द लाइक सर्वर ऑन द सेम पोर्ट on which we bound basically that particular socket on the server itself। तो हमारा सॉकेट ने मतलब लाइक सर्वर ने एक सॉकेट बनाया और उसको आईपी और पोर्ट पे बाइंड किया, और उसके बाद में हमारा जो क्लाइंट है उसने भी एक हमारा जो क्लाइंट है उसने भी एक सॉकेट बनाया, ठीक है, ये क्लाइंट मान लेते हैं, ठीक है। उसने भी एक सॉकेट बनाया और उसने भी एक आईपी और उसके पोर्ट पे, तो इसमें ये जो आईपी होगा ये तुम्हारा क्लाइंट का आईपी हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आईपी होगा ये तुम्हारा सर्वर का आईपी हो जाएगा, ठीक है। सर्वर के आईपी पे हमने बाइंड कर दिया, सर्वर वाले सॉकेट को सर्वर के आईपी पे बाइंड किया और क्लाइंट वाले को क्लाइंट के आईपी पे बाइंड किया। उसके बाद में जो क्लाइंट वाला सर्वर है वो एक रिक्वेस्ट, सॉरी क्लाइंट वाला सॉकेट है वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा इसके आईपी बेसिकली इसके सॉकेट पे, क्योंकि हमारा अब सॉकेट ही बाइंड हो गया है तुम्हारे पोर्ट से, तो पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लेकिन वो ये वाला सॉकेट जो है सर्वर का सॉकेट है वो हैंडल करेगा। तो ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट। ओके, नाउ व्हाट? when the details are added, when it is bound, you notice here that the IP address for the client is the same in this case. This is going to resemble our practical. So the IP address will be the same because it's the same computer, but the port number will be different, and the client doesn't actually have any control over the port number. This is allocated automatically. okay. For the server, this can be specified. The port number. तो क्लाइंट के टाइम पे इनका जो पोर्ट है, बेसिकली क्लाइंट का जो पोर्ट है उस पे क्लाइंट का जो पोर्ट है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड हटा दूँ तो क्लाइंट का जो पोर्ट है इस पे इनका कुछ भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लाइक कि जब भी ये उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम लोग रन करेंगे तो दैट वुड चूज़ अ पोर्ट रैंडमली, आई थिंक एक रैंडम पोर्ट असाइन हो जाएगा, और वो पोर्ट उस पोर्ट से हम लोगों का जो सॉकेट है वो बाइंड हो जाएगा, और फिर वो वाला सॉकेट जो क्लाइंट वाला सॉकेट है वो तुम्हारे सर्वर वाले सॉकेट को रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दिस पोर्ट, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हम लोगों के पास इस पोर्ट को सेलेक्ट करने लगे, इस पोर्ट को चूज करने के लिए हम लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, वाइल वी कैन
for this port we can like specify this port. You can choose the port in this case. तो हम अगर सर्वर की बात करें तो सर्वर पे हम लोग चूज कर सकते हैं कि हम लोग इस पोर्ट को लाइक बाइंड करना चाहते हैं सॉकेट से, बट इन केस ऑफ क्लाइंट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर इट. ओके, number that it wants to listen out on, but regardless, what it can do is put out a request once it's been bound. So it can put out a request to connect to the port number of the server. So even though it exists on its own different port number, it can put out a request to connect to the port number of the server. And then once that request has been acknowledged and accepted by the server, notice here that we don't just connect the two sockets, but the server actually duplicates itself, duplicates the socket to enable the connection between the server and the client. Notice there the arrow pointing between the duplicated, the newly created sockets, which has status connected. that's something new. I didn't know about it. like कि तुम like जब हम लोग सर्वर पे, अच्छा तभी ऐसा होता है कि अच्छा समझ गया, तभी ऐसा होता है कि एक पार्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर वो डुप्लीकेट नहीं, लाइक फिर स्केलिंग की जरूरत पड़ती है हमको. आप Holds the समझ same रहे port number and IP address as the server, but then we also maintain the original socket, which is still listening out हो, on स्टिल that लिसन. port. ओके, सो ठीक है ठीक है. तो अब क्या होता है, जैसे ये एक रिक्वेस्ट भेजता है तो दिस सर्वर जो है वो क्या होता है, वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है, और एक जो है वो अब बाउंड की जगह एक जो है वो अब कनेक्टेड हो जाएगा इससे. ठीक है, बाउंड से पहले लिसनिंग था. तो कुछ स्टेट्स होते हैं, अगर मतलब लाइक सर्वर के हम लोग स्टेट्स देखें तो क्या क्या स्टेट होते हैं. वो होता है तो इसने डुप्लीकेट कर लिया खुद को. एक यहाँ पे है जो अभी भी लिसनिंग कर रहा है और दूसरा कनेक्ट हो गया. तो क्या क्या होता है, लिसनिंग होता है. ठीक है, उससे सबसे पहले क्या होता है, अनबाउंड होता है. उसके बाद में फिर बाउंड होता है. हम लोग जब इसको पोर्ट से बाउंड कर देते हैं बाउंड होता है. फिर तुम्हारा लिसनिंग होता है और लिसनिंग के बाद में कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो ये चार लाइक स्टेट होंगे, लेकिन इस केस में हम लोगों का जो है वो लिसनिंग वाला होगा, क्योंकि हम लोग जब पोर्ट बाउंड कर चुके हैं और कनेक्टेड वाला नीचे वाला है. अनबाउंड नहीं, अनबाउंड. ठीक है, कनेक्टेड वाला ये हो गया. तो इसने सर्वर ने क्या किया, अपने आप को लाइक डुप्लीकेट कर लिया. ठीक है, तो सॉकेट डुप्लीकेट हुआ होगा सेम सर्वर और आईपी पे. एक सॉकेट कनेक्ट हो चुका है हम लोगों के क्लाइंट सॉकेट से, जो अब इसके द्वारा जो भेज रही गई रिक्वेस्ट है इसको हैंडल करेगा, और दूसरा अभी भी लिसन कर रहा है सेम सर्वर के आईपी और उसके पोर्ट पे. ओके, तो ये तुम्हारे चार बेसिकली स्टेट हैं तुम्हारे सर्वर के. ओके, For any other clients that may want to connect to that port number. So the server can simultaneously maintain its connection with clients, it just creates a new socket for them, as well as listening out for other clients attempting to connect to that socket. So now that we've had a look at the illustration of how the client connects to the server and how the socket is created, we're now going to transition and have a look at how we can code such a process. And for the server, this maps out to be 7 individual steps. And in this presentation, we're going to cover the first 5, from initializing the socket to creating the socket, and then thirdly, binding the socket to the port number and IP, and then listening out for clients connecting to that socket, and then accepting and connecting a client once it connects. So we're going to cover the first 5 steps. And तो सर्वर फंक्शंस अगर मैं देखूं तो सर्वर के जो टोटल तुम्हारे फंक्शंस होंगे वो होंगे, इसमें लिख लेता हूं मैं. सर्वर के टोटल तुम्हारे 7 लाइक फंक्शंस हैं. बैकग्राउंड देता हूँ ये. ठीक है, सर्वर के तुम्हारे टोटल 7 फंक्शंस हैं, जो कि ये हैं. सबसे पहले WSA स्टार्टअप होगा, जो तुम्हारे WSA स्टार्टअप जो तुम्हारे सॉकेट को इनिशियलाइज किया. उसके बाद में तुम क्रिएट करोगे सॉकेट को. ठीक है, उसके बाद में तुम बाइंड करोगे सॉकेट को. ठीक है, बाइंड करोगे सॉकेट को. उसके बाद में तुम सॉकेट को लिसन करोगे, लाइक सॉकेट को बाइंड करके लिसन करने के लिए बोलोगे एक पार्टिकुलर पोर्ट पे. और उसके बाद में तुम एक्सेप्ट करोगे कनेक्शंस को क्लाइंट से भेजी हुई, और कनेक्ट करोगे क्लाइंट और सर्वर को. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्टार्ट के 5. उसके बाद में जो जो हम लोग इस वाली वीडियो में देखेंगे वो ये स्टार्ट के 5 हैं. अब नेक्स्ट वाली में रिसीव फ्रॉम सेंड टू भी है, फिर क्लोज भी है. तो नेक्स्ट जो 2 बचे हुए हैं वो हैं तुम्हारे, अभी तो ये हम लोग 5 देखेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसीव. ठीक है, रिसीव और रिसीव फ्रॉम, फिर सेंड एंड सेंड टू. आई थिंक इन दोनों में डिफरेंस यही होगा, सेंड और रिसीव फ्रॉम में, कि रिसीव फ्रॉम बेसिकली एक पार्टिकुलर तुम्हारा एक पार्टिकुलर क्लाइंट की बात हो रही है कि उससे रिसीव करो, और सेंड टू जो है वो
एक पर्टिकुलर क्लाइंट की बात हो रही होगी कि उसको सेंड करो, और रिसीव और सेंड जो है वो जनरल होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम लोग फर्स्ट टाइम पे जब हम लोग क्लाइंट से कुछ रिसीव करेंगे तो वो रिसीव में जाएगा, और क्लाइंट को जब हम लोग एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ हमने रिसीव कर लिया तो वो सेंड से जाएगा। बाकी जो है वो रिसीव फ्रॉम और सेंड टू में जाएंगे, तो डुप्लीकेट हो जाएगा सॉकेट बेसिकली। उसके बाद में हम लोग सेंड टू और रिसीव फ्रॉम यूज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। और फिर उसके बाद में लास्ट में है एक तुम डिस्कनेक्ट करने के लिए, लाइक कि जब सर्वर डिस्कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दे, सॉरी जब क्लाइंट एक डिस्कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजे, तब तुमको वो वाला जो सॉकेट जो तुमने डुप्लीकेट किया था एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, उसको लाइक हटाना होगा ना, ताकि हम लोग के सॉकेट्स जो हैं वो लाइक सॉकेट्स के पूल होता होगा जिसमें से हम लोग सॉकेट चूज़ करते होंगे, तो उसकी लिमिट ना खत्म हो जाए। मोस्ट वेली यही होता होगा, लाइक रिसोर्सेज को सही से मैनेज करने के लिए हम लोग को डिलीट भी करना पड़ेगा। तो क्लोज बोल दो या डिस्कनेक्ट बोल दो, ठीक है। तो क्लोज हो गया, ये 7 क्लोज सॉकेट, हाँ ठीक है। तो ये 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं हम लोगों की। अगर हम लोग सर्वर की बात करें तो सर्वर के केस में हम लोग की ये 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसमें से हम लोग आज की वीडियो में 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। Have a look at the code block for each one of those steps in this presentation. And then in part 2, in the next presentation, we'll cover sending and receiving data in both the TCP and UDP protocols. All right, so 7 steps for the server. But if we move on to the client, we've actually got 5 steps here. And you notice that the first 2 are the same in terms of initializing the socket and creating the socket. But then rather than binding the socket, the client just attempts to connect to the given IP and port number. So the third step is different technically to the third step of the server, but the connection will still be the same. I think that maps onto the 5th step of the server there. So we're just skipping out basically step 3 and 4 of the server. And then 4 will be sending and receiving for the client. Okay, so this is the same as step 6 of the server. And then 5 maps onto step 7 again. So that's the disconnection once we've finished with the application. So as there is shared code here, once we set up the code for the server, we can then reuse that for the client as well. So let's turn our attention to the code now, and let's start with step 1, which is that the server, and the client as well, must load the DLL by invoking the WSA startup function. So let's take a look at the WSA startup function that we have to call first of all. So here we see that the function takes 2 parameters. It takes the version that we want to use of WinSock. So there may be multiple versions. I think there are 2, and I think 2.2 is the most. Initializing the DLL, okay, तो initiates use of the WinSock DLL by a process, जो कि तुम्हारा ये एक डेटा टाइप होगा, और ये भी एक डेटा टाइप है LPWSA डेटा, और इसको तुम 2 पैरामीटर्स ले रहा है, वर्जन रिक्वेस्टेड एंड जो LPSA डेटा है। LPSA डेटा बेसिकली पॉइंटेड टू LPSA डेटा स्ट्रक्चर दैट इज टू रिसीव डिटेल्स फ्रॉम द विंडोज सॉकेट्स इम्प्लीमेंटेशन। इफ सक्सेसफुल द WSA startup function returns 0, if not it could return 1. Recent version, so we have to format this in a Word data type. Again, very low Soham. level generic Windows data type there. Usually the सोहम भाई, हाय, ये सोहम कौन है यार? इफ यू डोंट नो तो सोहम पारेख चेक करो, check out on news or something. There are so many news around it nowadays. Not nowadays, I think 1 month before there are so many news about Soham Parekh. Check it out. types in uppercase are Windows types, by the way, as you're probably seeing. So WSA, remember, stands for WinSock API, and we also see those different data formats throughout the slides coming up. Okay, so back to the version requested. Yes, we have to. So okay, तो हम लोग init WSA startup की बात करें तो that would, ठीक है, init WSA startup की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से एक साउंड बनाते हैं, एक साउंड क्या एक एरो बनाते हैं जो, ठीक है, ये इनिट कर रहा है WSA स्टार्टअप को। और WSA स्टार्टअप बेसिकली क्या करेगा, WSA स्टार्टअप जो विंडोज़ में वो WS32 जो हमने DLL फाइल देखी थी, कहाँ गई वो, ये वाली DLL फाइल विंडोज़ में सिस्टम 32 में, और यहाँ पे थी वो WS32 नाम से, WS232 नाम से, हाँ ये वाली जो DLL फाइल है इसको इनिशिएट करने की बात हो रही है। दिस इज़ बेसिकली लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉकेट्स फॉर विंडोज़ जो विंडोज़ ने किया है। इनिशियली सॉकेट्स यूनिक्स के लिए बने थे, ऐसा बोला है अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो में। तो जिसको भी भाई वीडियो देखनी है तो ये निकोलस डे वाली वीडियो है, पार्ट 1 सॉकेट्स में पढ़ रहा हूँ, और पार्ट 2 भी है, TCP UDP इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसमें। तो अभी
पार्ट 1 हम लोग पढ़ते हैं आगे। To put that into a word type, and we're going to see how that works in a moment. And we just have to specify what version that we want to use of WinSock so that we load the correct DLL corresponding to that version. So I think it's going to be 2.2, that's the latest version. So we have to format that and then pass that as a word type for the first parameter of WSA startup. And then this second type here is this rather long-winded LP WSA data type, and that corresponds to a data structure. Now we're going to want to pass a pointer to this data structure so that the WSA startup can populate it. And we'll see in the next slide that this is just a data structure full of different configuration options, different settings that the WSA startup function is going to configure this for us rather conveniently. And then once it's finished its task, this WSA startup function will return 0 if it was successful, which is odd because usually it's the other way around, isn't it? Usually 0 corresponds with false or empty, meaning that the task wasn't fulfilled successfully. But here it's the other way around. It's 0 if it was successful, and then anything other than 0, which may correspond with an error number, which could then be used to be printed out the screen if it was unsuccessful. And looking ahead, actually, हाई ऑर्डर बाइट का मतलब क्या होता है? हाई ऑर्डर लो ऑर्डर बाइट्स क्या होता है? हाई ऑर्डर बाइट मीनिंग in the context of multi-byte data like integers, the high order byte refers to the byte that contains the most significant bits, the leftmost bits. Okay, अच्छा तो समझ गया. लेफ्ट मोस्ट बिट्स को वो बेसिकली जो होता है वो माइनर वर्जन नंबर बताता है. हाई ऑर्डर स्पेसिफाइज द माइनर वर्जन नंबर, द लो ऑर्डर बाइट स्पेसिफाइज द मेजर वर्जन नंबर, और हाईएस्ट वर्जन नंबर बेसिकली हम लोग हाईएस्ट वर्जन नंबर को दे रहे होंगे एक पैरामीटर के रूप में, और एक पॉइंटर दे रहे होंगे LPWSA डेटा स्ट्रक्चर का. Okay. I think we do store that in a variable corresponding with a WSA error number. So that's what we're going to do there. We're going to use that to then check to see whether this WSA startup correctly loaded the DLL, the WinSock DLL, or whether we need to put out an error message to the screen to say that there's a problem. All right, so when we put this all together, we'll have a look at that. Now, let's move on and have a look at this LPWSA data structure that is going to be populated by a WSA startup. So here it's built. Hi guys, so currently we have 4 concurrent viewers. Hello everyone. और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे सीखते हुए वीडियोस बनाता रहता हूँ और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में बैठ के सीखेंगे. और अगर आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये टॉपिक पे वीडियो बना दो, सो करेंटली आई एम इन जापान. अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझको लिख सकते हो. मैं बनाने की कोशिश करूँगा अगर ढंग का हुआ, कोई टॉपिक ढंग का हुआ. बाकी मुझसे अगर बोलोगे कि दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैंने इनिशियली 1-2 वीडियोज़ बनाई है, बट आई डिडंट लाइक दैट. सो करेंटली आई एम लर्निंग थिंग्स. सो अगर उससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप बताना, मैं वो बना दूँगा. As a structure, here you see the WSA data structure, and notice there that there's lots of different attributes referring to versions, descriptions, statuses, different sockets there, other types of descriptions and char pointers. So thankfully we don't have to worry about specifying all this. WSA startup's going to do it for us. We just have to pass a pointer to this structure, and if successful, it will populate all of these different attributes with the corresponding version numbers. All right. WSA data structure contains okay, so WSA data about Windows sockets implementation. The WSA startup function returns a pointer to WSA data structure in the LP WSA data parameter. So that's useful. Let's now put this together and have a look at a full example. So here we go. Here's the first block of code that we're going to need to use in order to load our DLL. So notice the line in bold here where we call WSA startup. Now, the first parameter, we've created a word variable in the line above. And in order to format the version 2.2 into a word type, we're going to make use of the low-level function makeWord, which will put this together into the specified format so that we can then pass that variable to WSA startup, which is W version requested. So that's going to do that there. And then in the second parameter, we're going to pass the reference of our WSA data structure. Now, notice here that we created a variable of that data structure in the first line, WSA data of WSA data type. So we pass the address of that to WSA startup. They're the 2 parameters. And if it's successful, it will format that for us, as we just said. And if successful, it returns 0, which notice there we store in WSA ERR, short for error. And as we said before, that's probably going to pass back an error number if the WinSock wasn't found. And if it was found and loaded okay, then it passes back 0. So we've got to apply reverse thinking here to what we usually do. We usually check against 0, meaning that it's false or empty. System Here it's everywhere around. It's 0, was fulfilled and it was found. But anything other than 0 would... तो हमने एक WSA डेटा का एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया और उसका पॉइंटर दे दिया हमने बेसिकली पास बाय रेफरेंस, और एक वर्ड एक इंटीजर दिया, एक वर्ड डेटा टाइप डिफाइन किया, और ये मैंने इंटीजर रिटर्न करेगा तो इंटीजर को वो कर दिया. और WSA स्टार्टअप एक फंक्शन है ओके जो तुम्हारा W वर्जन रिक्वेस्टेड ले रहा है, जो कि तुमने एक वर्ड बनाया है 2x2 का. अब ये डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड दिस फंक्शन मेक वर्ड, ये क्या कर रहा है, बट ये कुल मिला के एक वर्ड टाइप का डेटा स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा होगा, जिसको इन्होंने W वर्जन रिक्वेस्टेड नाम के वेरिएबल में डाल दिया और उसको पास किया है. आई गेस
ये बेसिकली तुम्हारा पॉपुलेट करने के लिए कि अगर ये चल जाए, WS स्टार्टअप सही से वो कर दे तो ये पॉपुलेट कर देगा और ये रिटर्न कर देगा आई गेस, ये जो कि इंटीजर होगा, इंटीजर में 1 और 0 ऐसा कुछ रिटर्न करेगा। was not found. And notice below we've got some conditional statements here zero to say है। that, well, if anything other than 0 was returned to WSA ERR, error number, it's just an integer by the way, if anything other than 0 was returned, then we didn't find winsock, then therefore we've got to put something out to screen to say that. But then other than that, if WSA startup returns 0, then we can say that the winsock was found. And then we're also making use of the system status attribute of WSA data to print the appropriate status to screen. Okay, so that may come in useful there, and no doubt we'll make use of that further on as we print more updates to screen regarding WinSock and the socket connection. So that's a useful part of WSA data there, even though we don't actually specify the values for these attributes themselves. They're useful for printing out to screen. All right, so that should be all we need for step 1 to load this DLL. Let's now move on and have a look at step 2. So WSA डेटा बेसिकली तुम उसमें एक WSA डेटा के डेटा स्ट्रक्चर में एक सिस्टम स्टेटस नाम का कुछ मेथड होगा या नॉट मेथड, वेरिएबल होगा इनसाइड दैट, और जिसको ये कॉल कर रहा है, यहाँ पे स्टेटस बता रहा है। अगर लाइक WSA एरर जो है बेसिकली ये अगर 0 नहीं है तभी, अगर ये 0 है तो फिर तो ये रिटर्न कर देगा, सॉरी 0 नहीं है, इसमें क्या है WSA एरर डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 अगर इसने रिटर्न किया है तो ये नॉर्मल लाइक बता देगा कि हाँ स्टेटस कनेक्ट हो गया, मतलब फाउंड हो गया विनसॉक DLL। और अगर 0 रिटर्न नहीं किया है तो ये बताएगा विनसॉक DLL इज नॉट फाउंड। ओके, And to remind you, Understood. step 2 is where we create the socket specifying the protocol to be used. So this is where we refer to the choice of either using UDP or TCP. Now, as we said, we're going to go on to explore the differences between them in part 2, but for now, we'll just stick with specifying TCP. So let's look at the socket function. And the socket function here takes 3 parameters. And you notice that they're actually all integer types. So they're more high level than what we've been dealing with so far. And in order to specify whether we want to choose UDP or TCP, we can't pass these inner strings. We actually have to use particular constants here to refer to a particular integer value for either TCP or UDP, okay, because they're integer types. So the first parameter is referring to the address family, okay, and so this is a bit more high level. We just have to pass in AF underscore INET there to refer to the fact that we are going to select between either TCP yes, so or UDP. I have like tried implementing sockets by myself also once, but I failed drastically. So that's where I learned about this address family thing. AF INET is basically we are using for UDP or TCP. That's the value that we want to pass in for the first parameter. And moving on to the second parameter, we specialize within that family type specification because we then choose either sock underscore stream for TCP or sock underscore datagram for UDP. So I think in these practicals, we're going to be using TCP. So we're passing the constant sock underscore stream to select TCP. And TCP then finally, for okay. the third parameter, referring to the protocol, again, we're just going to pass in a constant there for TCP. And that works out to be IP proto underscore TCP. And then the socket function itself takes that information and creates the socket that's bound to that specific communication protocol. So whether that's TCP or UDP. And there's further binding to take place in the next step as well when we talk about binding the IP and port number to the sockets. But that's a separate step, so we'll come on to that. But anyway, तो बेसिकली हम लोग एड्रेस फैमिली देंगे जो कि तुम्हारा AF INET होगा, UDP TCP के लिए AF INET यूज़ करते हैं। फिर टाइप देंगे, टाइप बेसिकली हमें सॉकेट का टाइप बताना है, तो हम लोग सॉकेट के टाइप के लिए हम लोग क्योंकि TCP यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सॉकेट स्ट्रीम नाम का एक कांस्टेंट देंगे। और प्रोटोकॉल में हम लोग देंगे IP प्रोटो TCP क्योंकि हम लोग को TCP यूज़ करना है, UDP नहीं यूज़ करना। function will return either 0 if that binding of the TCP or UDP information was successful or not, and it was able to create the socket. It turns 0 like a WSA startup, but anything other than 0 is going to be a socket error. All right, and we've actually got a constant for that as well, which is all enough a case with a underscore in between, and that's going to be returned if there were any problems with binding this information to the socket or creating the socket. We're going to return that. So what happens then is, as we've already initialized the DLL, then we've best to deregister our application from using it so that other applications can make use of it and the resources are not stretched too thin. So good housekeeping would be to clean up and free up the resources so we can then invoke the WSA cleanup function. Okay, so WSA cleanup एक फंक्शन है जो तुम्हारा रिसोर्सेज जो भी तुमने सॉकेट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हो, लाइक WS232 DLL को यूज़ कर रहे हो, इसको फ्री करने के लिए काम आता है। WSA cleanup function terminates use of winsock to DLL. Okay, the return value is 0 if the operation was successful, otherwise the value socket error is returned. Okay, when it has completed the use of Windows sockets, the application or DLL must call WSA cleanup to deregister itself from a Windows socket. Multiple applications may share a DLL. Windows tracks the number of applications using each DLL and will only remove the DLL from system memory when it is no longer required. Okay.
which will do just that. It will free up the DLL so that other applications can make use of it. So this is a function that we can invoke should the socket function return something other than 0. And if we go on to the next slide now, we'll so see there should be like together. multiple there will be multiple applications using that WS232 DLL फाइल. अगर हम लोग जब हम लोग WS से स्टार्टअप फंक्शन को चलाएंगे तो क्या करेगा, वो WS2 DLL फाइल को रजिस्टर कर लेगा मेमोरी में. विंडोज़ जो है वो अभी इसने जैसे बोला कि विंडोज़ जो है वो ट्रैक रखता है कि एक DLL फाइल कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, और जब तक हम लोग मैनुअली उसको डी रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक जब तक हम लोग WS से क्लीन अप फंक्शन नहीं चलाएंगे तब तक वो हम लोगों का एप्लीकेशन को ट्रैक करता रहेगा कि हाँ ये भी इस DLL फाइल को यूज़ कर रहा है. तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. सो इन केस अगर हमारा सॉकेट नहीं रजिस्टर हो पाता है, किसी कारण से कोई एरर आता है, तो हम लोगों को WS से क्लीन अप चलाना है ऐसा बोल रहा है. और WS से क्लीन अप क्या लेता है, इनपुट में कुछ नहीं लेता है, वाइड होता है. तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि इसने सर्वर सॉकेट बनाया सॉकेट नाम का. इसमें AF INET जो बेसिकली एड्रेस फैमिली दिया, सॉकेट स्ट्रीम दिया. सॉकेट स्ट्रीम बेसिकली बता रहा है कि हम लोगों को TCP कनेक्शन यूज़ करने, TCP UDP हम लोग TCP प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, TCP IP. तो उसके लिए सॉकेट स्ट्रीम दिया. IP प्रोटो बेसिकली ये टाइप है, ये तुम्हारा प्रोटोकॉल है, तो हम लोग TCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं. तो ये भी ये दे दिया. अब इनवैलिड सॉकेट जो है इसने देखा इफ सर्वर, तो इसने इनिशियलाइज किया था इनवैलिड सॉकेट नाम से, एक कांस्टेंट से इनिशियलाइज कर लिया सॉकेट को. तो अगर देखा कि यहाँ से रिटर्न सर्वर सॉकेट चेंज नहीं हुआ है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, या जो रिटर्न करना चाहिए इसको 0 रिटर्न करता है इन मोस्ट केस, बट ये रिटर्न नहीं किया, तो क्योंकि इनवैलिड सॉकेट ही रहेगा. तो देखा कि इफ सर्वर सॉकेट इज स्टिल इनवैलिड सॉकेट देन सी आउट दिस की एरर हो गया सॉकेट में, ठीक है. और WS गेट लास्ट एरर, तो ये तो एक फंक्शन है जो तुम्हारा लास्ट एरर को दे देगा. एंड फिर तुम WS क्लीनअप को रन कर देते हो, क्योंकि तुम्हारा जो WS232 वाली जो DL फाइल है उसको अब तुम डी रजिस्टर करना चाहते हो, ताकि विंडोज़ उसको अब ट्रैक ना करे कि तुम्हारा एप्लीकेशन भी उसको यूज़ कर रहा है. अदर देन दैट अगर ये कुछ नहीं हुआ, यानी हम लोगों का जो सर्वर सॉकेट है वो इनवैलिड सॉकेट नहीं रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि सॉकेट जो है वो ओके हो जाएगा. और फिर हम लोग जो करना होगा सॉकेट के साथ वो कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग WS क्लीनअप चलाएंगे, ताकि हम लोग अब DLL फाइल जो है लास्ट में वो भी डी रजिस्टर हो जाए. For example, so here's the second block of code that we're going to need to write. And if you have a look at the line in bold, again, we've got our socket function being invoked, and that's going to require the three parameters referring to the TCP constants. The first one we specify that we want to choose either TCP or UDP, so that's AF INET, just refers to the family of protocols of which TCP and UDP are part of. And then we get a bit more specific, because in the second parameter we pass sock stream referring to TCP, and then again in the third parameter IP proto TCP. Okay, so if successful, that will return a socket in the form of the type socket, and then we can just store that in a local variable. So notice we've created a variable called server socket of the socket type in the line above, the first line here. And then we just got some error checking like we had last time in the first step. So if server socket is invalid, anything other than 0, basically, meaning that it wasn't successfully completed, then we can output the error message. Here we can actually make use of WSA get last error, and that's a particular function which keeps track of what's happening with the socket and will give us some specific information referring to what that problem was that prevented the creation of the socket. And then, as we've just said, we then want to free up the resources, so we want to unload the DLL and say WSA cleanup afterwards if there's a problem, so that other applications are not competing with us, as we're not making use of this resource. We might as well let others make use of it. And then if we return 0, meaning that we have created the socket, then else we're okay. All right, so that's the second step. And just before we move on to the third step, let's just briefly say that as we are creating the socket, we also want to then close the socket after we finish with it. So at the end of the full 7 steps, after we finish the application, like we हम लोग unloaded the क्लोज DLL, सॉकेट if we have a चलाएंगे. problem, क्लोज सॉकेट बेसिकली तुम्हारा सॉकेट लेगा जो सॉकेट तुमने ओपन किया उसको. WSA cleanup to unload the DLL. We also want to clean up the resources allocated with the socket. So therefore, there's a particular function for that, which is just called close socket, and then takes the parameter there, which refers to the variable that we created to hold the server socket. So that's step 2 then, creating the socket. So first step, just to recap, was loading the DLL through WSA startup. Second step was creating a socket using socket and now function. third step, we want to and यहाँ WSA cleanup भी था एक, और फिर तुम्हारा यहाँ पे close socket भी था. port number to the socket. And to do this, we can make use of the bind function, which takes 3 parameters. The first is the variable of the socket type. So this is what we just created using the socket function in step 2. So we can pass that unbound socket to the bind function as the first parameter.
Then the second parameter is going to be the address of a variable of a structure, and this is the SOC_ADDR structure, short for the SOC address, and this is going to be a structure that contains attributes for the IP address and the port number. So we'll take a look at that in the following slide. But anyway, we just pass the address of a variable of this structure to this parameter, a little bit like the WSA data structure, which we saw in the first step. Difference there was that the function actually populated that for us. Here we're going to fill in some of the details ourselves and then pass the variable of that structure to this function so it can bind that data to the socket. But we'll take a look at that in the next slide. But now the third parameter here is just the length of bytes of the structure. So we just work out the size of the structure and just pass it as an integer. And there's a particular function we can use to work that out for us. We don't have to calculate it manually. We can use the size of command to work that out. Okay. All right, and then the bind function will bind the data that we pass to it, the IP and the port number, to the sockets. And as always, it returns a confirmation if it's worked or not. And as always, it will return 0 if it has been successful. But if it wasn't able to bind, then it will return something other than 0. It will be a constant, which is socket error. And then we can unload the DLL and also close the socket as the bind was unsuccessful. So let's move on now and have a look at the SOC address in structure that we spoke about in the previous slide. And as we said, this is going to hold some attributes referring to the address family. That's the first one. And as we know, this has to be AF_INET to refer to the family that contains TCP and UDP. And we're going to go with TCP, but still we have to state that it's of the AF_INET family as the first attribute. And then we have the port number we're going to pass in. And then next we have the IP address of the machine. And we've also got a fourth parameter here, which refers to the size of the structure. Now, we're going to have to adapt our structure to an older type, which is the SOC_ADDR structure. Now, this is slightly different from the SOC_ADR in structure. That's a newer structure, but we have to adapt our structure to this one. And so we've got a bit of padding here just to make our size of our structure adapt to the size of the older structure. And also later, we're going to make use of a htons function to convert our port number, which just in case that's in the host byte order, to do a byte placement, whether you place the bigger numbers of the byte first, referred to as big endian, or whether you place them at the end, referred to as little endian. There's some variation between CPUs as to what order they store the bytes in. But anyway, the htons function makes sure that anything that's in little endian format is converted into network byte order format, which is big endian. Okay, so we'll see that in the next slide. Endian क्या है? Little endian, big endian, ये क्या होता है? Big endian and little endian refers to the order in which multi-byte data like integers or floating point numbers are stored in a computer memory. Big endian stores the most significant byte first at the lowest memory address, which little endian stores at least significant stores the least significant byte first. Okay, basically ये तुम्हारा ये तुम्हारा एक तरीका है कैसे हम लोग हैंडल करते हैं मल्टीबाइट डेटा को. तो अगर बिग एंडियन की बात करें तो वो जो है वो स्टोर करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को पहले लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पे, जबकि जो लिटिल एंडियन है वो तुम्हारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स को पहले ही स्टोर करने की कोशिश करता है स्टोर करने की कोशिश क्या है स्टोर करता है. And just on the previous point, mentioning about htons, we have to pass the port number to that function, and then that returns it and stores it in the SIN port attribute of the SOC_ADR in structure, which you'll see the variable of that structure is defined as the first line here. But what's missing in this code is the assignment of the port number to the port variable. Okay, this is going to be in the... भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर से जा रहा है. ठीक है, मैं C++ में पढ़ा हूँ, लेकिन इतना ठीक है. ये सर्विस AF_INET INET Python, ये कौन सा फंक्शन है? लूपबैक. ओके, ये बहुत ऊपर जा रहा है. ये सब तो पढ़ने में ही. Practicals, you'll see this is just going to be a standard integer variable, and we're going to assign the value of 55,555 to that, and that value stored in the variable port is going to pass to the H. Hi guys, so we have concurrent 4 viewers right now. So if you guys are new here, you can subscribe to the channel. I am currently working in as a software engineer in Japan. अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, कैसे आना है, कैसे क्या करना है, तो मुझसे पूछ सकते हो. Other than that, let's htons function here. Learn. All right, so you'll get that in the practical, it's just not here on this slide. But anyway, let's focus on the bind function. And here it's in the center of the code, and it's actually embedded within an if statement here. So we're calling bind, and we're passing the server socket, which we defined and populated from step 2 as the first parameter. And then next, as the second parameter, we pass in the address of the service variable. Now that's the variable of the SOC_ADDR in structure, which you'll see up above. We've also assigned values for the attributes of that. The AF family, which is the address family here, we're saying that's of INET, which is referring to TCP and UDP. And then we've also basically SOC_ADDR इन नाम का एक मतलब टाइप का एक वेरिएबल बनाया सर्विस नाम से. फिर इस वेरिएबल में जो जो बेसिकली इन्होंने सिन फैमिली है उसको AF_INET किया. ओके,
एड्रेस फैमिली को AF inet कर दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, ठीक है। तो हम लोग इसमें हमने क्या किया, सर्वर सॉकेट जो हमने पहले बनाया वो सर्वर सॉकेट को पास किया, फिर सॉक एड्रेस ये लाइक ये तो पॉइंट नॉट पॉइंटर बाय रेफरेंस हो गया, तो ये सर्विस का पॉइंटर हो गया, ठीक है, ये जो है। और ये कन्वर्जन कर रहे हैं क्या इस पॉइंटर को सॉक ADR पॉइंटर में? आई थिंक वही है, मतलब लाइक क्या बोलते थे हम लोग इसको, डेटा को हम लोग क्या बोलते थे यार, अगर हम लोग चेंज करते तो उसका कुछ नाम होता था, व्हाट चेंजिंग, कास्टिंग बोलते थे, हाँ कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सर्विस का पॉइंटर है जो इन्होंने ये ऊपर बनाया है, इसको ये लोग सॉक एड्रेस के पॉइंटर में कास्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये लोग साइज भेज रहे हैं सर्विस का, ओके। Also define the loopback address as the IP there, 127. अगर ये सॉकेट एड्रेस है, इफ दिस लाइक इन्होंने ये चलाया और इसने रिटर्न किया सॉकेट एड्रेस, सॉरी सॉकेट एरर, तो ये बाइंड फेल्ड दिखा देंगे, WS से गेट लास्ट एरर हो गया, फिर क्लोज भी कर दिया सॉकेट को और WS को भी क्लीन कर दिया, ओके। 0.1. Other than also then that, converting the otherwise port, we which, as will we said, show was that there, bind is okay. 55,555, putting that into the correct bytes placement order, and then putting that in the SIN port attribute of service. So basically, we've bundled up all this information in the service variable, and then what we're doing is we are casting that to an older SOC ADDR type, just for compatibility and consistency there. And then in the third parameter of the bind function, we are just going to work out the size of the बेसिकली जो ऊपर है ये इन्होंने टोटल लाइक जो सर्विस वेरिएबल बनाया है सॉकेट DDR इनका, उसी से ये लोग लाइक उसी को ये लोग सेट कर रहे हैं सही से, कुछ मैनुअली सेट करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें साइन फैमिली पहले इन्होंने सेट किया सर्विस में AF inet, फिर inet pton नाम से एक फंक्शन का यूज़ किया जिसमें इन्होंने AF inet लाइक फैमिली सेट की है, फिर इन्होंने जो लूप बैक तुम्हारा IP एड्रेस है वो दिया है, और उसके बाद में इन्होंने उसी सर्विस वेरिएबल के सिन एड्रेस का S एड्रेस लाइक सॉकेट एड्रेस दिया। सिन एड्रेस आई डोंट, सिन एड्रेस क्या, इसको क्या पढ़ेंगे सिन एड्रेस को, व्हाट इज सिन ADDR, what is the meaning of sin ADDR dot SDR and inet ADDR? So is what I am using in my programming. What does this achieve? Sin address is the IP address in the socket. The socket structure also contains other data such as a port. The type of sin ADDR is a union, so it can be accessed in 3 different ways. Okay, as 4 1 integer, 1 byte integers, SU1W, 2 byte integers, or S address is that is 1 4 bytes integer. Okay, inet ADDR converts an IPv4 address from a string in dotted decimal representation to an integer. This function is deprecated. Okay, तो हम लोगों के पास कौन सा फंक्शन है, inet pton फंक्शन। inet pton फंक्शन क्या करता है, तो हम लोग देखें inet pton फंक्शन, pton फंक्शन inet है ना, तो inet pton function often require inet pton is an INSI version is network utility function used to convert an internet network address from its standard text presentation format to its numeric binary form. Okay, this conversion is protocol independent, meaning it can handle both IPv4 and IPv6 addresses. Okay, it takes a text input में क्या, it takes a text string representing IP address, either IPv4 in dotted decimal notification or IPv6 in standard format, and the address family that is AF inet for IPv4 and AF inet 6 for IPv6. It returns the corresponding numeric binary representation of IP address in network byte order. तो ये जो चला रहे हैं ये बेसिकली वही बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चला रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने htons का यूज करके पोर्ट भी service variable of the SOC ADDR in structure and pass that as the number of bytes. All right, so all of that, if it manages to bind the IP and the port to the sockets which we created previously, then it's going to be okay. It's going to go down to the else of this if statement. Bind was okay. If it returns 0, then all is okay. But if it returns a value that corresponds with the socket error constant, then obviously we've failed to bind the IP and port number to the socket. So therefore, we're going to get the last error. Again, we're going to make use of that WSA get last error function, which handily keeps track of what the problem is, and then put out a specific message to the screen. And then also do a bit of housekeeping. We'll close the sockets as we're not going to make use of it, and also clean up the resources. We'll release the DLL as well. So that's step 3 now. तो आज के लिए इतना ही करते हैं यार, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा लाइक क्लास अटेंड करनी है, जापानीज की क्लास है वो अटेंड करनी है। अब
एज वी कैन सी हम लोग लगभग मतलब लाइक क्लोज टू 1 आवर हम लोग लाइव हैं 1 घंटे से, और हम लोगों ने 47 मिनट्स की ये वीडियो देख पाई है अभी तक। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।